So, audience, today I have a very distinguished guest speaker, Miss Nida Shehzad. She is founder of Sehat Kahani, and also she has experience as member of Prime Minister Youth Association. So, thank you so much, Miss Nida, आपने वक्त निकाला हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा that what is सेहत कहानी और ये कहाँ से सफर स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाएगा। थोड़ा सा मैं स्टेप थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। थोड़ा सा स्टेप बैक लूंगी मैं। तो सेहत कहानी जो है मैंने फाउंड नहीं किया था। मैं उसमें उनकी जो टेक है उसको लीड कर रही हूँ। सो करंटली आई एम द सीटीओ ओवर देयर। एंड सेहत कहानी जो है मेरी जिंदगी में आया व्हेन आई वाज इन माय लास्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी। आई हैव अ बैकग्राउंड इन कंप्यूटर साइंस। तो मैंने आईबीए से अपना कंप्यूटर साइंस स्टार्ट किया था। मेरा कोई प्लान नहीं था टेक में जाने का। टेक वाज द लास्ट थिंग ऑन माय माइंड। मुझे एक्चुअली इकोनॉमिक्स पढ़ना था। या फिर मुझे मीडिया स्टडीज करनी थी। मुझे पता था क्लियर कट के मुझे बीबीए नहीं करना है बिकॉज सब कर रहे हैं। तो उसकी कंपेटिटिव एक तो मार्केट बहुत है, दूसरा ये कि मेरे कभी इंटरेस्ट में अलाइन ही नहीं किया उसने। तो जो है मैंने ईएम के लिए ट्राई किया पर उससे मेरा हुआ नहीं। सेकंड प्रायोरिटी मेरी सीएस थी तो मेरा सीएस में हो गया which was computer science. So when I started my education there, तो वहाँ पे हमें एक internship करनी होती थी, social internship, which is a compulsory part of the course. So that is when I started working with this on this project. That was a telemedicine project. पायलट प्रोजेक्ट था। सेहत कहानी से पहले बेसिकली जब सेहत कहानी नहीं था, तब उस प्रोजेक्ट पे हम एक 4-5 लोगों की टीम थी जो कि उस पे काम करना हमने स्टार्ट किया। तो मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप की थी। इंटर्नशिप थी कोई 2 महीने की। काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। कम्युनिटीज में जाके काम किया क्योंकि बचपन से बड़े होते होने तक आई नेवर रियली हैड you grow up in a very protective environment, when you have that kind of बहुत privileged environment से आप belong करते हैं, तो आप जो on ground reality होती है उससे काफी दूर होते हैं। आपको समझ नहीं आती है कि एक्चुअल में वहां पे क्या हो रहा है। अपने घर से बैठ के सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है कि सब कुछ आसान है, पानी मिल रहा है, रोटी मिली, सब कुछ। So I started going at the communities. I remember उस internship में I completed around 15 कैंप्स हमने कराए थे कराची के डिफरेंट एरियाज के अंदर। तो उससे मेरी मोटिवेशन काफी हुई क्योंकि 14 साल की उम्र से ना कुछ करना था जिंदगी में, पता नहीं था क्या करना है। हाँ, कुछ लेगेसी छोड़नी थी, कुछ बड़ा करना है, चेंज लाना है, बट नो आइडिया व्हाट दैट इज गोइंग टू बी। सो व्हेन दिस हैपेंड आई वाज लाइक दिस इज प्रॉब्ली माय कॉलिंग। But then the internship ended, so I was like, I'll stay in touch with you guys, but अब खत्म हो गई, अब क्या कर सकते हैं, पढ़ाई में दोबारा लगना है। मेरा जब आखिरी साल स्टार्ट हुआ तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय प्रीवियस सुपरवाइजर ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप एंड शी इज लाइक we're establishing the company and we need someone for marketing and branding, because I knew graphic design at that time. तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास ही हम जानते हैं कि तुम्हें ग्राफिक डिजाइन आता है, so just join us and you can work part time. For someone who is completing their education and then they get the opportunity to make money during that time, being the first few people in that batch, that was like a big deal for me. So I was like, and I loved the team, I loved the course. So I was like, I'm gonna take it up. So I took it up, and we started working. So जब सेहत कहानी का जो मेन मॉडल था वो ये था कि दो बहुत मेजर मसले हैं पाकिस्तान में। एक तो बहुत प्राइमरी ये है कि हेल्थ केयर का गैप है। हेल्थ केयर सिस्टम की अगर हम बात करें तो अराउंड 50% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन मोर और लेस does not have access to quality healthcare. Healthcare का होगा, क्वैक्स के पास चले गए, दाई के पास चले गए, मर्द डॉक्टर्स के पास चले, but not a quality care solution that is accessible by them. तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अब मसला ये था कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, बिकॉज ऑन द अदर साइड जब हम डॉक्टर्स का रेशियो देखें तो डॉक्टर्स के अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ा चंक है डॉक्टर्स का जो कि फीमेल्स हैं। वो डॉक्टर बन जाती है और वो कह रहा था डॉक्टर बहु फिनोमिना। तो वो डॉक्टर बन जाती हैं एंड देन व्हेन दे बिकम डॉक्टर्स दे एंड अप नॉट प्रैक्टिसिंग। And the sad part is that 70 to 80% of the medical graduates comprise of females, and only 23% come back into the workforce. तो वो जो गैप है वो इतना बड़ा है कि हर 1000 पेशेंट्स के लिए आपके पास less than 0.5 doctors available है, which is literally nothing. मतलब that's like a major healthcare crisis. So to solve that problem, and अंडरस्टैंडिंग कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा ही बेहतर तरह से इस्तेमाल में, उस टाइम पे नया नया स्काइप
काफी काफी एक्टिवली यूज हो रहा था, स्काइप था, जूम बहुत शुरू शुरू का आया हुआ था। सो पायलट के अंदर हमने टेस्ट की थी चीज कि हम कम्युनिटीज को किस तरह से, एक डॉक्टर जो कि कहीं और बैठी हुई हो और एक पेशेंट जो कि कहीं और बैठा हो, उसको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और वो कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सके। उसमें काफी चैलेंजेस ये थे कि जाहिर सी बात है ऑनलाइन अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, सो आई एम नॉट श्योर हु दिस पर्सन इज दैट इवन अ डॉक्टर। और फिर आप इसको ले जाएं रूरल कम्युनिटी में, नॉट इवन फ्रॉम एन अर्बन बैकग्राउंड हु वुड हैव अ सर्टेन इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग capability, but from for someone who is based in a rural community. Yeah. खैर वहाँ पे हमने पार्टनरशिप की फ्रॉम विद दीज, हमें सबसे पहले ट्रेनिंग एक्चुअली जो दी थी वो दी थी एक साहब थे, उनकी बीवी हैड passed away, so he said that I have this space available, and इसमें मैं चाहता हूँ अपनी वाइफ के लिए उनकी उनकी जाने के बाद कोई लेगेसी के लिए, तो आप वहाँ पे क्लिनिक स्टार्ट कर लें बिकॉज आप हेल्थ केयर में काम कर। तो हमने वहाँ पे उसी कम्युनिटी से एक नर्स थी, उनको ट्रेन किया। उनको लैपटॉप चलाना नहीं आता था, उनको लैपटॉप चलाना सिखाया, लेकिन उनकी उनकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी थी। शी वाज वेरी वेल रिप्यूटेड इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। दिस वाज इन मॉडल कॉलोनी। तो वहाँ पे हमने उन्हें सिखाया एंड उन्होंने सीख भी लिया काफी एक्टिवली। शी लव टू लर्न। फिर वी connected her to a doctor who was sitting in Quetta, and whenever a patient came to her clinic, because nurse की तो काफी रिप्यूट बन चुकी थी, तो जब भी पेशेंट तो नर्स उनको फिजिकली काउंसिल करती थी और डॉक्टर से कनेक्ट कर देती। ऑनलाइन फिर उनकी कंसल्टेशन कंप्लीट हो जाती थी और आखिर में डॉक्टर जो है वो दवाइयाँ वगैरह दे देती थी। के अंदर थोड़ा मुश्किल था, जाहिर सी बात है, क्योंकि कम्युनिटीज में उनका सबसे बड़ा तो ये था हमारी वीडियो रिकॉर्ड या वीडियो कौन बात कर रहा है। हमारे लिए तो यही डॉक्टर है जो वहाँ पे नर्स है, तो ये दूसरी कौन है ये। but then with time I think we really worked into strategic partnerships, so हमने ऑन ग्राउंड पार्टनर्स काफी उठाए, हमने मोबिलाइजेशन में काफी काम किया, घर घर जाके लोगों को बताना कि अच्छा टेलीमेडिसिन जो है वो एक्चुअली कैन चेंज योर लाइफ। आप बजाय ऐसे कि आप जाके जब आपकी हालात खराब हो जाए, बहुत ही बुरी कंडीशन होता है, आप जाएं आगा खान या कोई बड़े अस्पताल, इससे बेहतर है कि आप उस सिचुएशन तक वेट ना करें, और जब आपकी प्राइमरी सिचुएशन बहुत शुरू की है, बहुत लाइक बेसिक लेवल पर है, तब भी आप चेक करा लें। एंड इफ ऑब्वियसली इट वर्सन्स देन यू कैन गो टू अ टर्शियरी केयर, बट दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड योर लाइफ इन अ लॉट ऑफ केसेस। So that is how Sehat Kahani started working, and that is when I joined as well. But हुआ It's ये Islamabad based or Lahore कि based? no, this is Karachi based actually. Oh, okay. So you are in Yeah, Karachi. yeah. I'm in Karachi. Yeah. तो जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही वो लोग भी आपस में बात करते थे, डॉक्टर एंड नर्स के बीच में। उसके बाद रियलाइज कि डॉक्टर्स जो है उनको हमने फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटी दे दी है, लेकिन कितनों को दे सकते हैं। क्लिनिक्स खोलने में जो कॉस्ट आती है, सेटअप करने में, एंड फाइंडिंग दैट राइट सपोर्ट ऑन ग्राउंड, दैट इज अ मैसिव कॉस्ट। हाउ कैन यू Yeah. क्रिएट more employment opportunities, and also make it accessible not just for the rural communities but also for the urban communities जिनके पास access होगा but convenience का नहीं है, convenient options नहीं है। तो उनके लिए हमने स्टार्ट किया एप्लीकेशन पे काम करना। एंड एप्लीकेशन की जब डेवलपमेंट का स्टार्ट हुआ तो मैं उस पार्ट टाइम ही कर रही थी, मेरा बैकग्राउंड लकीली था टेक के अंदर। तो उन्होंने कहा कि तुम तो वैसे ही काम कर रही हो, तुम आ जाओ और तुम ही टेक को बनाना शुरू करो हमारे साथ। सो जब मेरी खत्म हुई यूनिवर्सिटी, आई हैड अ जॉब ऑलरेडी एंड आई जॉइंड देम फुल टाइम। And from then we started off with one product which was the consumer application. उसको बनाने में हमने पहला वर्जन बनाया, फिर वो बिल्कुल उस तरह से नहीं बना जिस तरह से बनाना था। Then we scrapped it, we started again. तो ये पूरी एप्लीकेशन बनाने में ये जाके बनी 2019 में। Okay. And yeah, When you 2019 में started? we had the application. जी, I started working in 2017. Okay, so after 2 years ये जो है वो आपने launch किया. Yeah. It took 2 years because we worked on the first model and then the first model kind of crashed for So us. it was It before didn't work pandemic. out. Yeah, so that is the next phase of the story that हमने application बना ली, सब कुछ हो गया, we were like now we're going to launch it, so we did a soft launch and then we had planned के हम अगले 4-5 महीनों में उसको और passively launch करेंगे, marketing में invest करेंगे। And then COVID happened. The application never really got the chance to breathe. When COVID happened, it was I think March 20th था जब lockdown लगा था, if I'm not wrong, and we were 5-6 of us, we were sitting in the office and we were like we had gotten
because we work on ground with government bodies as well. Mm-hmm. So we had got a call from तानिया इदरिस उस तक लीड कर रही थी डिजिटल Yeah, पाकिस्तान। yeah, I know, I know. तो उस टाइम पे उनकी टीम से कुछ कम्युनिकेशन डेवलप हुई, कुछ इस तरह की रिलेशनशिप बनी, एंड दे वर लाइक वी वांट टू मेक telemedicine access available for everyone, so everyone should be able to access your platform free of cost, लेकिन and no one was really paying us for the services, but we did get obviously endorsement and it was at a national level. अब दैट वाज अ डिसीजन कि आपके पास बिल्कुल नई एप्लीकेशन है, आपको नहीं Yeah, पता ये चलेगी भी नहीं चलेगी, रोज की मुश्किल से 10 से 15 पेशेंट्स आते हैं, exactly. एंड इफ वी आर टू ओपन इट वी डोंट नो हाउ इट्स गोना बी, एंड वी डिडंट इवन नो कोविड का क्या सिचुएशन होती जाएगी, Mm-hmm. and then we were like, let's take, let's use this opportunity and be part of the bigger picture. Let's remember ourselves, for Mm-hmm. ourselves, कि हम हिस्ट्री का कुछ हमने थोड़ा सा पार्ट वो केटर किया, तो हमने एप्लीकेशन फ्री कर दी, एंड एप्लीकेशन फ्री करने के कोई 15-20 दिन बाद ही वी स्टार्टेड गेटिंग अराउंड 8,000 to 12,000 11,000 patients per day. And the interesting part was that these patients were not just from the urban markets but also from the rural communities. Mm-hmm. और हमें ये रियलाइज भी नहीं होता क्योंकि हम लोग मार्केटिंग में बिल्कुल उतने पैसे नहीं लगा रहे थे उस टाइम पे, देयर वाज, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट I एंड know, yeah. स्पेशली फॉर द कंज्यूमर मार्केट, यू नीड टू मार्केट इट लॉट, बट वो था नहीं, बस एंडोर्समेंट थी कि यू हैव दिस अवेलेबल, एंड देन ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड अगर मैं देखूं तो आपकी आईसीयूज बिल्कुल ही ओवरबर्डन थे. So the application became the go-to solution for the people of Pakistan during that time. हमने कुछ दिनों जब जब बिल्कुल एक पीक, क्योंकि काफी 2-3 वेव्स आई थी during that time period of COVID, तो उसके अंदर हमने जो है 20,000 तक पेशेंट्स देखे हैं इन अ डे. Mm. और उसमें डॉक्टर्स के एंड से हमारे पास ये अच्छा था कि Per हमारे day? पास वी जी पर डे का बता रही हूँ मैं. Consultations, video calls with Mm-hmm. doctors, not just for primary care issues, but even for issues जहाँ पे there were patients, there were females who were facing abuse at home. There were females who were facing, there was someone who wanted to abort her child because her child was a rape child. We've had cases like that. We had cases जहाँ पे patient जो था उसने call की कि मेरे घर के 4 लोग जो हैं they have passed away due to COVID and my symptoms are worsening, so tell me what to do. So we've had these, and I think for me that time was massively and would always be special because I remember I used to work around, मैं कोई 3 से 5 घंटे सोती थी around the clock Mm-hmm. क्योंकि application चल रही होती है 24/7, and I was like, this is the only way I can help people during this Yeah, time, yeah. and just be, because मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो मैं ऑन ग्राउंड पे जाके कुछ नहीं कर सकती. Mm-hmm. तो हम लोग डॉक्टर्स को कॉन्स्टेंटली रिक्रूट करते रहते थे, काफी डॉक्टर्स जो थी उन्होंने कहा हमें वॉलंटियर करना है, हमें जो है बिकॉज हम घर पे हैं, वी कांट गो आउट, वी नॉट इवन प्रैक्टिसिंग एट द हॉस्पिटल, सो वी Yeah. जस्ट वांट टू वर्क फॉर फ्री एंड जस्ट हेल्प पीपल एज मच. तो इसमें हमने यहाँ से भी, पाकिस्तान से भी थे, एंड देन वी हैड डॉक्टर्स फ्रॉम सऊदी अरब, Oh. Dubai, Australia, America. We had doctors from, we had patients from India as well, interestingly. इंडिया, बांग्लादेश. सो हमारी जो उसका एप्लीकेशन थी वो हमें खुद भी नहीं अंदाजा था कि वो ग्लोबली भी यूज होने Mm-hmm. लगेगी, सिर्फ पाकिस्तान में होगी. सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, एंड उसी टाइम पे वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दी कॉर्पोरेट एप्लीकेशन. अगर तुम्हारी कॉर्पोरेट एप्लीकेशन भी थी जिसमें हम कंपनीज के साथ भी पार्टनर कर रहे थे कि उनकी एम्प्लॉय बेस जो है उनको भी हम सर्विस दे सके. तो एक तो मॉडल हो गया कि आप कोई भी यूज कर सके जाके, स्टोर पे जाके एप्लीकेशन से कंसल्टेशन ले सके. दूसरा ये कि कंपनीज को हमने उस टाइम पे फ्री सर्विस दी हुई थी कि अपने एम्प्लॉयज को भी हमारी एप्लीकेशन दें ताकि वो यूज करें जब भी उन्हें जरूरत पड़े उसकी. सो वी हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑन मल्टीपल, और फिर हमने कुछ 10-15 दिन के अंदर ही अपना कॉल सेंटर खड़ा किया बिकॉज वी वर लाइक, एप्लीकेशन पे डॉक्टर अगर ओवरबर्डन हो भी जाती है, एटलीस्ट दे हैव समवन टू टॉक टू अंडरस्टैंड हाउ द एप्लीकेशन इज गोइंग टू वर्क, एंड दे हैव अ नंबर एट हैंड जिस पे वो कॉल करके अपनी जो भी उनकी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व कर सके. So Yeah. that was like a peak time, and uske baad se we started off with one product and 3 different platforms. Today we have 7 different products, and around 26 different platforms, Mm-hmm. because हर product के 3 से 4 different models हमने iOS, Android, web, फिर उसकी Yeah. जो है
या फिर उसकी हमने प्लग एंड प्ले बनाई हुई है, तो बट इफ आई एम सारी। नॉट रॉन्ग, उस टाइम गवर्नमेंट ने भी ऑफिशियली टेलीमेडिसिन और इस तरह के काफी सारे प्लेटफॉर्म लॉन्च जी किए। जी जी जी। तो सबसे पहला मॉडल ये वाला था, क्योंकि डिजिटल पाकिस्तान वाज ऑफिशियली फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट। फिर हम्म। वो डिसॉल्व हो गई थी उसी टाइम पीरियड के अंदर। गवर्नमेंट नहीं हुई थी डिजिटल पाकिस्तान में। आई थिंक तानिया इदरिस वाज रिमूव्ड या एट द या टाइम, ट्रू ट्रू। एंड और शी हैड रिजाइंड, आई एम नॉट श्योर हाउ दैट वाज। बट उसके बाद जो है जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किए थे। उन्होंने एक और प्लेटफॉर्म बनाया था सेहत एक्सप्रेस के नाम से। उनका एक वेब पोर्टल उन्होंने क्रिएट किया था फ्री सर्विस के लिए, उसमें भी हमारा उन्होंने प्लग इन किया था। सो द कंसल्टेशन पार्ट was provided by us. It was a plug and play solution, a web solution that we had created, but obviously it was endorsed as the government's platform only. So we found a lot of different partners during this time. We also gave our plug and play solution to HBL. तो HBL की जो एप्लीकेशन है, जो जिन जिन के पास HBL का अकाउंट है, उसके अंदर जो एप्लीकेशन डली हुई है उसके अंदर भी सेहत कहानी का विजिट डला हुआ है, जिस पे people can consult if they want to, using the application only. And these really help because the healthcare is not something that only one or two people need. The whole country needs it. And अगर आपने अभी तक 7 मिलियन लाइव्स ही टच की हैं, so that is literally nothing for an abadi जिसमें सवा तीन, such a big number of या people are suffering from healthcare issues. So that was the initial bit about सेहत कहानी। फिर बाकी तो फिर उसके बाद हम जब पेड मॉडल पर आ गए तो उसके अलग चैलेंजेस थे। लोगों ने कहा अब तो पैसे देने पड़ेंगे सर्विस के। But during आपकी that जो time, पर डे वो थी पेशेंट्स की रेशियो, वो डिक्रीज हो गई। जी जी डिक्रीज हो गई 50%। क्योंकि वो, yeah, 50 initially 50%, and then gradually it kind of decreased more. Then we had to invest more in marketing and depend more on our corporate solution कि companies जो हैं वो हमारी So for how long application। you provided services as free of cost? So 5 years? we provided till August 15th, हमने services provide की थी। उसके बाद I कोविड mean का 2 years, थोड़ा सा, 3 years? नो, दिस वाज फॉर आई थिंक मार्च से हमने स्टार्ट किया था। हमने अगस्त के अंदर वी हैड ओह स्टार्टेड अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स उसमें द चंद पेड। माह के लिए सिर्फ। जी 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 जी, हम्म। महीनों के लिए किया था हमने, जब कोविड का बिल्कुल पीक सीजन था। उसके बाद हमने उसको प्रीमियम मॉडल कर दिया था। तो हम्म। उसमें यह था कि शुरू की 1-2 कंसल्टेशन आपके लिए फ्री है, उसके बाद अगर आपको मल्टीपल या कंसल्टेशन चाहिए तो उसके एग्री। लिए यू कैन सब्सक्राइब टू द, बिकॉज हम्म। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे पैसा कमाना इज इम्पोर्टेंट टू सस्टेन द बिजनेस. So yeah, that was that. But I think during this time, the massive opportunity that I personally at a personal level got was कि एक अवार्ड आया था उस टाइम पे डायना अवार्ड के नाम से। तो हमने काफी ऐसे ही अप्लाई कर दिया था कि ठीक है, this is one person from the team who falls under the age category and this particular category, and इसको हम nominate कर देते हैं, and it kind of worked out. उस वक्त पता भी नहीं था डायना अवार्ड क्या था। डायना अवार्ड की जब एक्चुअल में हमें पता चली कि क्या उसकी वैल्यू थी, वो तब जब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी नेशनल यूथ काउंसिल बनाई थी, जिसका आपने मेंशन किया शुरू के अंदर। तो ये थी इमरान खान के टाइम पे, दे हैड मेड अ यूथ काउंसिल ऑफ 33 मेंबर्स, एंड उन मेंबर्स का ज्यादातर ये था कि कुछ ना कुछ अवार्ड उन्होंने जीता हुआ हो। तो उसके डायना अवार्ड्स के जो जो भी 6-7 लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान जीता है, उनको उसमें शामिल किया गया था। फिर काफी उसमें इन्फ्लुएंसर्स भी थे, स्पोर्ट्स के लोग हैं काफी उसके अंदर। फिर ऑब्वियसली वो डिसॉल्व हो गई अल्टीमेटली विद द गवर्नमेंट। That's something that happened too. And then there was a US based fellowship जो कि came as a blessing in disguise because काफी टाइम से ट्राई कर रही थी क्योंकि फेलोशिप का पार्ट हो जाए, एंड देन दिस वन हैपेंड। बट आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज कि पूरे बाकी जितने भी कोहोर्ट्स थे उन सबकी ये थी, इट वाज दे हैड टू ट्रैवल एंड एवरीथिंग। हमारे टाइम पे वो पूरी वर्चुअल थी, तो हमारी पूरी इंटरेक्शन उनसे वर्चुअल हुई थी। बट व्हाट हैपेंड थ्रू दैट प्लेटफॉर्म was that while I was working in Sehat Kahani, I met these 6 women who also are from Pakistan, and they also were the Tech Women Fellows. एंड वी फिगर्ड आउट कि एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में जो मेंटोरिंग का बेसिकली, कि जो आपने जैसे मेंशन किया कि खवातीन से आपने इंटरेक्शन जो है यू ट्राई टू ब्रिंग देम ऑन दिस या प्लेटफॉर्म एंड चैलेंज बिकॉज दे weren't willing to, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस की या तो कमी थी, या उनके इर्द गिर्द वो कम्युनिटी नहीं बनी हुई जो सपोर्ट कर सकती, या दे haven't found the right mentors. And there's so many brilliant women. It's not या like a
औरतों की कमी है, औरतों की कमी नहीं है। हम्म, कमी जो है वो है कॉन्फिडेंस की, कमी जो है वो मेंटोरशिप की है, कमी जो है वो अवेयरनेस की है, कि हमें पता नहीं है कि कहाँ किस चीज़ को कैसे रीच करना है, किस अपॉर्चुनिटी के बारे में कैसे पता लगाएंगे, पैसे कैसे रेज करने हैं अगर हमने and अपना how to स्टार्टअप deal बनाना है। certain circumstances. या एंड जस्ट समथिंग वेरी बेसिक एज अगर मैं करियर में हूँ एंड इफ आई वांट टू ग्रो, व्हाट आर दोस थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू ग्रो एंड रीच अ सर्टेन लेवल वेयर आई वांट टू रीच। सो दैट हैंड होल्डिंग इज नॉट डन, उसका बड़ा एक चैलेंज होता है। तो हमने कहा ये हम सब ने फेस किया हुआ है अपनी लाइफ में, अगर मेरे पास करेक्ट मेंटोर्स नहीं होते एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ माय करियर, I would not be able to be at the C level position in my company at this point. And that is why it's important that you have those women जिन्होंने कुछ experience किया हुआ है, वो आपको guide करें और आपका आपका आपको motivate कर सकें। तो उसके लिए we started working on this tele mentoring platform called Rehnuma. And रहनुमा का पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि वो खवातीन जिन्होंने या तो करियर गैप लिया हुआ है, या मिड लेवल करियर में है अपनी, उनको हम कनेक्ट, और ये स्टेम के अंदर प्राइमरली बिकॉज हम सब स्टेम के बैकग्राउंड से थे, इनको हम कनेक्ट कर सके उन खवातीन से जो कि बहुत एक्सेल कर रही हैं अपने करियर्स में, उनके पास बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं टू टेल देयर स्टोरी, बट शायद उनको you would not really know about them unless they're popular, or unless someone calls them and they ask them कि अच्छा आप किसी पैनल के अंदर आ जाएं या किसी स्पीकर के तौर पे, तब तक you won't really reach out to them, you won't know about them, and there's so many women in our circle. I have so many women जिनके बारे में शायद no one knows, but they're doing exceptional work and their own Hmm. capacity, because वो branding नहीं होती है, बहुत सारी different factors Yeah, होते हैं yeah. इसमें। It was important to connect women who needed help, who could be mentees, and connect them to people who have a lot of experience to share, a lot of knowledge to share, and primarily women. So we Hmm. started working on this, but then we were all working remotely, so वो थोड़ा एक challenge था. हाँ हाँ हाँ, Uh, तो स्टिल we're बिकॉज still हमारा working. इंटरनेट और उस तरह की सर्विसेज बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है. या तो वो एक चीज है जिसपे हम अभी भी काम कर रहे हैं, काफी इनिशियल फेज में ही है वो, हम्म. बट वी होपिंग कि उसको हम बाय नेक्स्ट ईयर वी कैन formulate it in a better way. So yeah, that's been some of the experiences that I've had या so far. भाई डिफरेंट एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस. अच्छा, इसमें आपने जिक्र किया जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस में आपने सब्जेक्ट जब सेलेक्ट किया, दैट वाज काइंड ऑफ रैंडम, दैट यू Yeah, हैड नो प्लान. yeah, सो yeah. आई थिंक समहाउ हम इस पे भी बात कर लेते हैं कि जब हम ये डिसाइड करते हैं अपने कैरियर ग्रोथ के हवाले से, तो बहुत सारी हमारी बच्चियां Mm, और बच्चे भी स्पेसिफिकली इन दैट एज ग्रुप और फैमिली की तरफ से भी बहुत ज्यादा होती है चीजें जो mm. हम देख रहे होते हैं. सो व्हाई यू डिड नॉट हैव प्रॉपर प्लान फॉर दैट एंड व्हाट यू सजेस्ट टू अदर्स, कि आपको बस जो मिले आप कर लें, या आपको अपने गोल्स के लिए कि नहीं मैंने उसी सब्जेक्ट में जाना है, डॉक्टर ही बनना है, मैंने पायलट ही बनना है. हाँ, इसके बहुत मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ये कि मैं घर में सबसे बड़ी थी, ओके. तो मैं वो थी दैट द फर्स्ट चाइल्ड इज यूजुअली समवन जिसके साथ काफी सॉरी सर्दियाँ बहुत है, जिसके साथ काफी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। सो एक तो वो था दैट आई वाज जस्ट डाइविंग इनटू एक्सप्लोरिंग माय करियर एंड एवरीथिंग, तो वो जो गाइडेंस का था वो था इन अ लॉट ऑफ वेज, बट मेरे घर में सब डॉक्टर थे एंड व्हेन आई स्टार्टेड एजुकेशन, तो मुझे डॉक्टर एक तो बनना नहीं था, दूसरा ये कि अच्छा अगर डॉक्टर नहीं बनना है तो इतनी सारी फील्ड है, इसमें कौन सी चूज करूं मैं, एंड नो वन रियली न्यू अबाउट कौन सी करनी चाहिए। बेसिक सा था कॉमर्स कर लूं, इंजीनियरिंग कर लूं, तो है। सो देन एक तो ये मसला था, दूसरा ये था कि आई थिंक द करेक्ट काइंड ऑफ जो हम अपनी ए लेवल्स ओ लेवल्स में पढ़ते हैं उसमें बड़े लिमिटेड या सब्जेक्ट्स होते हैं। सो नेक्स्ट व्हाट यू वांट, लाइक आपने मास्टर्स और एमएस आगे पीएचडी की तरफ, या फिर इधर ही आपने अपना कैरियर सेहत कहानी को दे दिया? नहीं, so I plan on diving into mentoring and couple of other things that I have in the pipeline that I want to work on. But Sehat Kahani has added a lot of value in my life because it came to me at a time when I didn't really know मुझे करना क्या है जिंदगी में. Oh, So it just happened to me, या and it felt एक्सपीरियंस, या right. एक्सपीरियंस वाइज Yeah. बहुत अच्छा रहा. But then with time, I think
you learn a lot of different areas where you need to work. Like for example, healthcare is a massive part, yes, हम्म बट मुझे एजुकेशन में काफी काम करना है। हाँ, बिकॉज जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप करियर का क्यों नहीं, तो मुझे ए लेवल्स ओ लेवल्स की अगर मैं बात करूं, तो उसका हम्म जो करिकुलम था आई नो इवन उससे पहले बहुत हम्म लिमिटेड होता है। आपका आपका मेडिकल हो गया, सोशल साइंस हो गया। सोशल साइंस जो हमें पढ़ाते हैं और जो आज एक्चुअली होता जो है एज अ डिग्री, इट्स लाइक पोल्स अपार्ट। या ट्रू सेम गोज फॉर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस का तो मेरे टाइम पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हम्म When I started, I had graphic designing, and graphic designing was the closest that I got to computer science in my head, you know, using a computer basically. So वो चीजें उस टाइम पे थी नहीं, तो मेरे पास वो कोई मेंटोरशिप इतनी थी नहीं। दूसरा ये कि सोशल मीडिया एंड इंटरनेट जितना मैसिवली उसने प्रोग्रेस किया है, आई एम ए 90s चाइल्ड, सो मेरे टाइम पे तो वो ट्रांजिशनिंग हो रही थी, यू नो, वी वर हाफ वे previous generation के अंदर halfway moving towards a Gen Z era. So like I did not really know what way to go to, proper कोई guidance इस तरह की थी नहीं। आज के टाइम पे there's a lot of, अगर मैं आज के लोगों की बात करूं, there's a lot of content available online, yeah. there's a lot of training material online, इतनी opportunities के platforms हैं, इतने courses offer हो रहे होते हैं। If I had this बट डू यू when I थिंक started दैट off, कि right? सोशल मीडिया हमारी फीमेल्स और यंग हमारी जो गर्ल्स हैं उनके लिए, डू यू थिंक जो कंटेंट आ रहा है दैट इज, Yeah. आई डू नॉट से द वर्ड इनअप्रोप्रिएट, बट स्टिल आई थिंक देयर इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टिंग इन आवर सोसाइटी, ऐसा भी हो रहा है। सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आ रहा है, देखें, कोई भी चीज जिस पर्पस से स्टार्ट होती है, आमतौर पे वो जो बैलेंस होता है ना, वो खत्म हो जाता है। सो हाँ, इट बिकम्स vulnerable. या इट बिकम्स वल्नरेबल। इट बिकम्स, जब आप ओवरली किसी चीज को यूज करेंगे, तो उसका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था उससे वो हट जाता है, और फिर उसकी एक्सप्लॉइटेशन, उसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट होता है हम्म वो ज्यादा पड़ने लगता है। And that is what has happened with social media as well. It started off with a simple idea कि अच्छा, जो लोग शायद लेटर्स लिखते हैं एक दूसरे को, शायद कॉल पे कभी कभी बात कर लेते हैं, उनके लिए एक इंटरेक्शन का तरीका बन जाए। बट हम्म टुडे, बिकॉज ऑफ everything that's happening, there's a lot of oversharing, there's a lot of competition, या there's a lot of mental health issues that एग्जैक्टली are happening because of social media. And I personally, मैं कोई उससे नहीं कह रही कि हाँ बस यही मसला है, बट मेरे personal experience में I think it has a massive role to play in the increasing mental health problems that are, you know, that are एग्री constantly happening in our society. Because you're constantly competing with each other, you're constantly comparing your life with the other person's life, and in reality, कंपैरिजन what is being shown is completely different from what's actually happening. So virtual image. yeah, so see, the problem is I don't think social media is bad. I think it is very Yeah, there are a important number to, of positive things also. पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज एन एंटरप्रेन्योर, how would you know about that person if they don't do their branding? And how would Yeah. they do their branding? They would do it online only, on social media. um, which is why it's important. And even for hiring and everything, agar LinkedIn की बात करूँ, LinkedIn is like the right way to actually reach out to people, find good human resource for your business. अगर मैं working environment की बात करूँ, so like these things are important. But obviously अगर आप दिन भर रात भर बैठ के सिर्फ फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इट्स नॉट रियली गोइंग टू हेल्प एनीवन। या एग्जैक्टली, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में ऐसा ही हो रहा है, और ये चीज आई डोंट थिंक सो इट कैन बी कंट्रोल्ड सडनली। यू कांट कंट्रोल इट एट दैट लेवल, बिकॉज अगर आपने प्लेटफॉर्म दिया है तो उस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का होता है। हाँ, हाँ उसमें आप लैंग्वेज को जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो मसला ये कि देखें, a lot of times people are working for their own agendas as well, as compared to looking at the bigger picture. या तो कुछ चीजों पे फोकस किया जाता है, and कुछ चीजों पे नहीं किया जाता। इस हाँ अगर but if it's not happening from that particular platform only, then you need to focus on it maybe at the educational level, या at the household level.
अब अगर मैं फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म की बात करूं, जिसको हम डिस्कस भी कर रहे थे थोड़े टाइम पहले, कि we need to have more more females के around rights and how they suffer and everything, but it's also important to realize that today and even otherwise, जो हमारी जैसी सोसाइटीज हैं उसमें men have a stronger voice. They are the people who make the decisions, and you can't expect कि इस तरह की सोसाइटी के अंदर आप एक दिन खड़े होके अपने राइट्स की बात करेंगे and everyone would magically understand. That is now how it works. It's important to take them into loop, make them understand as well कि अच्छा इस चीज में सिर्फ मेरा फायदा नहीं, आपका भी फायदा है. दोनों तरफ से you're actually not asking for your own rights, you're actually making their life easy as well. If we share certain responsibilities, it is going to be less burden on you in certain ways, and we can share that responsibility, and you don't have to, on the contrary, control our lives with because that is the main problem that is being happening, कि दोनों एक दूसरे को इस तरह से देखें कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन ऐसा तो नहीं है. It's not really about कि I hate you, you hate me. It's more about give me the right to choose. And not because I deserve it. Obviously, I deserve it, but also because it's also going to make your life easy. So that dialogue is very important. कि आप जो भी messaging पहुंचा रहे हैं, आप understand करें कि आपका social context क्या है, and are you involving the right stakeholders, or are you just making it ऊपर से and not really driving into the right into what the problem is and how it can really be solved. ओके, थैंक यू सो मच निदा, आपने हमें वक्त दिया और बहुत कुछ आपसे शेयर करने को मिला. एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल इनवाइट यू और डिफरेंट टॉपिक एज वेल. और आखिरी 2 मिनट है, आप उसमें ये बताएं कि गुस्सा आता है तो क्या करती हैं हमारी सोसाइटी में? टॉलरेंस गुस्सा आता है तो क्या करती हूँ? गुस्सा आता है तो क्या करती हूँ? गुस्सा आता है तो कभी लिख के जवाब नहीं देती या रिस्पॉन्ड नहीं करती. अच्छा. गुस्से में जो चीज आप कह देते हैं किसी को भी, आप जो रिएक्ट कर देते हैं, those are things you can never take back. So I try not to do that. What I do feel is that I look into myself and try to understand कि यार मैं अपने एंड पे इस चीज को किस तरह से फिक्स कर सकती हूँ. मैं अपने एंड पे क्या वो चेंज ला सकती हूँ, क्या ये गलती मेरे एंड पे थी, और अगर नहीं थी, so how do I not create a very big issue out of it, but also try to solve the problem and make the other person understand why they're wrong. To convey the other person or not? To what the other person? Sorry. Convey उसको convey करना चाहती हैं आप या नहीं? Depend करता है situation पे, to be honest. काफी बार convey करने से situations can get better. काफी बार convey करने से they can only get worse. So you really have to have that emotional intelligence at that point and see how the other person is going to take what you have, what you have to say. So yeah. Okay. But गुस्से के लिए honestly I think mental health पे ज़्यादा focus करना चाहिए. Yeah, I agree. But आप बहुत सारी awareness आ गई है, बहुत सारे sessions हो रहे हैं, बहुत सारे TV almost every second I have a lot of circle of psychologists और वो गई होती हैं, तो उस पे तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा बेहतरी. हो भी आएगा, और रिस्पेक्ट भी आई थिंक आ जाए कि आपका एक सर्टेन ओपिनियन होगा, मेरा एक सर्टेन ओपिनियन होगा. इट माइट क्लैश बट वी नीड टू रिस्पेक्ट इट रिगार्डलेस. True. Okay, see you Nida next time. It was very amazing talk. Inshallah I wish. Thank you Ali. See you. Bye.